सिक्किमलाई पूर्ण जैविक राज्यमा परिणत गर्ने कष्टसाध्य अभियानलाई सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट सरकारले दत्तचित्त सहित पूरा गरेको सत्य तपाई हामी सबैलाई थाहा छ। सिक्किमलाई पूर्ण जैविक राज्य बनाएर सिक्किमलाई रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि एवं विषादी मुक्त खेती गर्ने राज्यका रूपमा परिणत गर्ने कुरो लड्तर विषय थिएन। तर एसडीएफ अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङको नेतृत्वमा रहेको एसडीएफ सरकारको दृढ संकल्पका अघि अनेकौं बाधा अडचन आए पनि अन्ततः सिक्किम 2016 मा पूर्ण जैविक राज्यमा परिणत भयो। यो एसडीएफ को पवित्र क्रान्तिको पहिलो जित थियो। सन् 2003 मा सिक्किम राज्य जैविक बोर्डको गठन गरेपछि यस अभियान अन्तर्गत यस क्रममा राज्यका 66,000 किसानहरूलाई जैविक खेतीका निम्ति प्रशिक्षण, शिक्षा एवं सरकारी सहयोग प्रदान गरियो। सन् 2010 मा सिक्किम जैविक अभियानको आरम्भले यस अभियानलाई थप बल प्राप्त भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मानकका आधारमा सिक्किमको भूमिलाई जैविक खेतीका लागि योग्य एवं रसायन मुक्त प्रमाणित गर्ने काम सिक्किम राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेन्सी SSOCA ले सुरु गरेर राज्यको लगभग 70,000 हेक्टर भूमि र 66,000 किसानलाई जैविक प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सिक्किम सफल बन्यो। छोटा सा राज्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और उसने ग्लोबल सारे स्टैंडर्ड पार कर दिए हैं, और आज सिक्किम हिंदुस्तान का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेट बन चुका है। एक तो गभर्नमेंट अफ इंडिया को पॉलिसी नै धेरै अन्तर भएर आए र आज तपाईलाई खुसीको कुरा हुन्छ कि मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर में अर्गेनिक मिशन को लागि या अर्गेनिक एउटा मिनिस्ट्री को एउटा बेग्लै अंग छ र अर्गेनिकलाई अहिले चाहिँ टेवा दिनु थालेको छ। Keep the good health of the soil, provide quality food to the people, then provide chemical free air and water to the people, and also conserve the rich biodiversity of the state. Sikkim is in India's northeast and often overlooked part of the country. Until earlier, this small state was only really known for these beautiful Himalayan mountains. But now, it's the organic fields that are attracting the attention. काम गरेर खाएर हेरेर एक्सपिरियन्स हामीले नि गरेको हुन त हामी पढेको त छैनौं, हामीले खाएर काम गरेर नि हामीलाई एक्सपिरियन्स हुन्छ। अनि हामीलाई अब त्यो महसुस पनि छ कि यो अर्ग्यानिक खाँदा फेरि धेरै भिनन्दा अलिकति ताकत आउने, अब त्यो नन अर्ग्यानिक खाँदा स्लो पोइजन जस्तो नि छिट्टो यसलाई याद नपाउने, तपाईको मतलब यसको ढिलो स्लो पोइजन भनिन्छ। अब साइन्सबाट हेर्यो भने चाहिँ अब जस्तै 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष स्लो पोइजन हामीलाई कसरी भेट्दैछ भने त्यो कुरो नखाँदा फेरि चाहिँ घोडा गल्ने, ताकत कम्ती आउने, हिँड्दा फेरि उकालो हिँड्दा फेरि सास बेसी बढ्ने, धेरै खालको बिमारीहरू आउने, यस्तो कुरोहरू आइलाग्दो रहेछ। अब हामीले यो खाँदा फेरि त्यो कुरो चाहिँ नन अर्ग्यानिक जसले खाँदैछ त्यो कुरोहरू चाहिँ उहाँहरूले झेल्नु परिरहेछ। जैविक खेती मार्फत सारा संसार एउटा नयाँ
प्रकृतिमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ यदि संसारका मानिसले यसलाई अँगाले भने। The 2018 Future Policy Gold Award. Congratulations. हिस्टोरिक एउटा डिसिसन दियो सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा कि सिक्किम जैविक जाउँ अब हामी भन्ने। सिक्किमको बढ्दो जनसङ्ख्यामा पुर्याउनु त हाम्रो सिक्किमको सानो यो एरियामा त हुँदैन रहेछ। जति साइन्टिफिक टेक्नोलोजी लगाएर हामी खेती गर्दा पनि हाम्रो यहाँको फार्मर्सहरूलाई हाम्रो यहाँको पपुलेसनलाई पुग्दो हामीले यहाँको खानाबाना मतलब कुनै अब फुड ग्रेन्सहरू हामी निकाल्न सक्दैन रहेछ। त्यो हो भनेदेखि चाहिँ सिक्किममा एउटा काम के गरौँ भनेदेखि हाम्रो भएको जमिन चाहिँ एकदम स्वस्थ राखौँ। यसमा मैं सिक्किम की बात कर रहा हूं जो देश का पहला और इकलौता 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है। आपको बताना चाहूंगा कि सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पूर्ण रूप से जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, यानी खेती के लिए वहां रासायनिक खाद्य का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये न सिर्फ सिक्किम के किसानों के लिए 21वीं सदी में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है, बल्कि जैविक खेती की मदद से सिक्किम की मिट्टी भी फिल्मी गाने की तरह सोना और हीरे मोती उगल रही है। 2050, let's all set a target. No poisons in our food, no poisons in our farming, and with you leading, I'm sure we'll get there. Thank you. दो साल 3 साल ये पैदावार बहुत कम हुआ, तो उस टाइम में हम लोग ये जो यंग कृषक लोग थोड़ी सी टूट भी गया था कि ये ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक करने से ये ठीक नहीं होता है कि पैदावार पूरा टोटल ख़त्म हो गया। तो उस टाइम में सरकार ने एक एश्योरेंस दिया है कि 2 साल 3 साल का जो आप लोग का पैदावार कम होगा उसका भरपाई करेंगे। हमने ट्राई कंटिन्यू करने के बाद में वो एज इट इज़ फिर रिवाइव हुआ कि पैदावार पहले जैसा होने शुरू हो गया। आज सृष्टि के लिए सबसे खतरा केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स के अत्याधिक प्रयोग से हो चुका है। यदि हम इसको नहीं रोक पाए तो एक दिन सारी दुनिया को महात्रासदी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने सिक्किम में जैविक खेती की अवधारणा को अमली जामा पहनाने की कसरत कर दी। सिक्किमले सुरु गरेको जैविक अभियान सफलताबाट आज सम्पूर्ण देश प्रेरित भएको छ। भारत सरकारले हालै जैविक खेतीका लागि अन्य राज्यहरूलाई पनि प्रोत्साहित गरिरहेको छ। जैविक खेती विश्वका लागि सिक्किमले दिएको वरदान हो, मानव कल्याणको नयाँ मार्ग हो, स्वच्छ पवित्र एवं पोषणयुक्त अनि विषाणु मुक्त खाद्यान्नको मार्ग हो। सन् 2016 मा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार सिक्किममा मानिसहरूको औसत आयु सन् 1990 को तुलनामा 10 वर्ष बढेको पाइन्छ। यसलाई जैविक खेतीद्वारा उत्पादित खाद्यान्नको सकारात्मक प्रभाव मानिन्छ। एसडीएफ सरकारको यस महान अभियानको सुरक्षा र सम्वर्धनद्वारा सिक्किम र सिक्किमवासीको सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ। आउनुहोस् तपाईं हामी सबै मिलेर सिक्किमले आर्जन गरेको जैविक राज्यको मान्यतालाई यथावत राख्दै राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा आफ्नो क्षमता अनुरूप योगदान दिउँ।